Good morning and welcome to the lively session. I don't know how this is going to start. Already, we are showing 700 points down on Bank Nifty, 200 points down on Nifty 50, and likewise on this thing on Sensex. So देखते हैं how this works out to be, how this session for us, all of us. हमारा सिर्फ एजेंडा इतना ही है कि we don't lose money. In fact, we आज के दिन इन्वेस्ट करके पैसा कमाना will be a different call. Premiums on the PE will be really high to go into it right now. So I don't think that's a great idea. It falls another 200 300%. Well, sorry, 300 400 points. So that's that. We'll see how that works out to be. But as of now, it seems कि we have opened the market basically नीचे. And I've not yet looked at the charts. मैं तो सिर्फ pre-opening के ऊपर ही I'm making this comment on it. So let's see how this works out for us. Thank you for joining in. I hope you are having a good day and you're enjoying this summer heat, unexpected summer heat. हमारे तो यहाँ पंखे वंखे चल गए हैं. Just in case आपको पंखे की आवाज़ आ रही है पीछे से, you can just tell me on the comments and I'll try and reduce it. But yes, it's a great day to start anything. And yes, as I see right now, already Bank Nifty is at 54,800, which is a great way downwards. इसमें कोई दो राय नहीं है कि this is a lot more नीचे than we expected to be. Nifty is down 280 points. Today's support, as we had mentioned in my earlier call today, for Nifty, the support was 23,600. उसको already break करके वो 23,500 पर आ चुका है. So if this closes below that, if it gives us a decisive closure below 23,600 today morning, then you can see that it is going to go down further. So let's hope कि ऐसा ना हो. But अगर ये हो रहा है तो ये हो रहा है. The market is really negative sentiment. We are looking at shortages of oil, shortages of gas. These are some real scenarios. अभी ऐसा नहीं है कि किसी ने बटन ऑन कर दिया तो it will be fine and tomorrow everything will work out. That's not how it's going to be. थोड़ा सा भी अगर we are seeing this tons of volatility. So it's a great day. I had a good morning session today as well. It was nice. After many days, I was able to solve my technical issues and have a good chat. फिर भी मुझे लग रहा है कि there was a delay, there was this, there was that, etc. But no worries. Right now we will figure that out and we will see how to work around it. So that's great. In my opinion, I think we should be doing this market live at 5 a.m. in the morning instead of doing it at 8 a.m. in the morning, because एक live session है, एक live session को उसी time पर close करना would be a great idea. Like 5:30 तक ये हो जाना चाहिए ताकि आप लोग you can get max out of this day planning. 8 a.m. is too late for everybody. So no issues. I will see how I can do that. 5 बजे उठना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है. $300 points down, 23,500. 23,700 was its support today. Tomorrow morning, I'll try and do it at 6 a.m. in the morning. Finish it by 6 a.m. in the morning. So 5:30 I should be in. I think हो सकता है. We can do it.
कैन सोचने से ही होता है. Okay, so I think it's quite interesting. It is working out well. वही 900 पॉइंट्स नीचे खुलना इज नॉट फनी. मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है मार्केट में. जैसे कि मैंने अपने मॉर्निंग सेशन में भी बोला था फॉर ऑल ऑफ यू कि डू नॉट ट्राई एंड फाइंड द बॉटम टुडे. डोंट थिंक कि आज बॉटम है. 25,000 और पॉइंट्स है बॉटम तक जाने के लिए. वी कैन गो टू जीरो ऑल्सो, राइट? बॉटम ही ढूंढना है तो. सो फोकस ऑन द फंडामेंटल्स. अगर फंडामेंटल चेंज होता है तो आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं. डो नॉट थिंक कि फंडामेंटल चेंज नहीं होगा तो बॉटम भी चेंज नहीं होगा. ओके. It is very very important for you to understand that, and I hope I'm able to make or reinforce that point. I'm getting a lot of what do you say, good and bad expression emails from a lot of our listeners also. वो बहुत बार बोलते हैं कि ये बॉटम फिशिंग मत करो, तुम बहुत ही बेरिश साउंड करते हो. पर एक बात याद रखिए कि जब भी क्रिकेट में चाहे आप कितने भी एग्रेसिव हो, हर बॉल पर छक्का नहीं मार सकते हो. कुछ बॉलों को डिफेंस भी करना पड़ता है और कुछ बॉलों को बैक फुट में डिफेंस करना पड़ता है, कभी फ्रंट फुट पे डिफेंस करना पड़ता है. सो डोंट टेक इट पर्सनली. ज़रूरी नहीं है कि हर बॉल पे छक्का मारा जाए, बट ज़रूरी ये है कि आउट ना हो. ज़रूरी ये है कि रन्स बनते रहे, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप preserve your capital and don't just lose it in a bearish market for bad bets. Anybody who bought the dip yesterday or in last 5 days, आप सोचो जिसने हर पहले दिन सोचा कि this is a dip and I'm gonna buy, फिर जिसने दूसरे दिन सोचा, तीसरे दिन सोचा, चौथे दिन सोचा, पांचवें दिन, all of these are in a loss. और इफ यू जस्ट फॉलो द नंबर्स, अगर आप सिर्फ हमारे DII बाइंग के नंबर्स फॉलो करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट द नंबर ऑफ पीपल ट्राइंग टू बाय द डिप आर सिग्निफिकेंटली हायर. DIIs have been buying for last 4-5 days. और छोटा मोटा नहीं खरीद रहे, बड़ा बड़ा खरीद रहे हैं. 2 मार्च को 16,000 करोड़, 4 मार्च को 27,000 करोड़, 5 मार्च को 18,000 करोड़, 6 मार्च को 20,000 करोड़, 9 मार्च को 17,000 करोड़, 10 मार्च को 17,000 करोड़. दिस इज ग्रॉस बाइंग. बेचना तो छोड़ दो, दिस इज ग्रॉस बाइंग. दिस इज टू मच मनी. टू मच मनी टू फाइंड अ बॉटम. टू मच मनी टू लूज. Too much money that is yours. Don't do bottom fishing. Thank you. I'm gonna go quiet and I'll speak with you at 9:30. बाय द वे, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कुछ लोग इसी वजह से AC और बाकी चीज़ों के स्टॉक्स लिए जा रहे हैं. सो इट्स अ ग्रेट थॉट. बहुत ही बढ़िया थिंकिंग है, पर वो क्या पैसा बनाएगी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सो इसको डिस्कस करेंगे हम एज द डे प्रोग्रेसेस कि विल यू एक्चुअली मेक मनी और विल यू नॉट मेक मनी ऑन दीज इन्वेस्टमेंट्स, एंड विल फिगर दैट आउट बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. ठीक है? आई विल नॉट बाय द न्यूज़ जस्ट बिकॉज गर्मी बढ़ गई है एक दिन. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं AC जाके खरीदना शुरू कर दूंगा या AC का स्टॉक खरीदूंगा. सो दैट्स मी. ज़रूरी नहीं कि मेरी बात कही हुई सच हो. Anyways, I will have a chat with you at 9:30. Right now, I'm gonna go on mute. I will only speak to you at the beginning for like next 2 minutes. Hang in there. If you have a question, type it here. It'll be best for me to answer those as I see them. I have a few questions lined up. We will see when to break those out to you.
So we are back. First 15 minutes of the browsers today have not been any less dramatic. Sensex opened at 76,369. उसने लो लिया 75,871 का. Wow. And right now is at 76,027. कल के क्लोज से it's almost 850 points low. It's 1% down, more than 1% down. That is a big downward shift. Similarly, with Bank Nifty, it is 1.4% down from its previous close. जबकि ओपन के आसपास ही घूम रहा है. Like open was at 55,008. The close right now it is trading at 54,960. So it's basically 40 points away. But which means that the trading sentiment was very, very bearish at the start itself. And Nifty, as you see, it closed at 23,866. Its support today was 23,600. It opened at 23,674. Right now, it's trading at 23,600, just hitting that support. Just hitting that support. That's very, very crucial, because if it drops from here, 23,600 से नीचे close होता है, तो the decrease to 22,500 will be fast, as what is predicted. इसका simple reason है. The reason is very simple. The reason is there is no clarity on how how the gas deficiency is going to be cured. ऑयल तो मिल जाएगा हमें, तेल मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रैटेजिक एनर्जी रिजर्व्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं. जबकि हमारे हरदीप पुरी सर ने बोला है कि इट इज़ नॉट हरदीप, आई थिंक हरदीप पुरी ने बोला है कि 74 डेज का हमारे पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोल रिजर्व है. बट उसमें से 60 डेज का पेट्रोल रिजर्व, 64 डेज का पेट्रोल रिजर्व इज ऑलरेडी कमिटेड. ओके, सो हमारे पास सिर्फ बचते हैं 9.5 दिनों का पेट्रोल रिजर्व, जो हमारे लिए तकरीबन एक 9.5 दिनों का पेट्रोल रिजर्व इज रिमेनिंग. एंड हमारे पास ऊपर से एडिशनली रशियन फ्यूल आ रहा है. सो द प्रॉब्लम इज नॉट ऑयल, द प्रॉब्लम इज गैस. गैस के लिए हमारे पास अभी तक कोई ऑल्टरनेट रिसोर्स नहीं है. गवर्नमेंट ने राशनिंग शुरू कर दी है ऑलरेडी, क्योंकि उनको पता है कि ये जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है. I have covered this in a different video. I've covered it in my call today morning. If you want to deep dive, you can listen to those, and that will be good for you, just in case. Okay. But right now, we are seeing the effect of all those shortages on our index very, very strongly. काफ़ी अच्छे से ये मूव कर रहे हैं और काफ़ी नीचे की तरफ जा रहे हैं. The bearish sentiment is very, very strong. अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, ऐसे मार्केट में बॉटम फिशिंग ना करें. ऐसे मार्केट में ऊपर से अभी का पीई ना लें, बिकॉज देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट हैज बीन देयर. तो थोड़ी भी करेक्शन रही या साइडवेज रहा मार्केट, सारा का सारा प्रीमियम डीके हो जाएगा. और द रिस्क प्रीमियम रिमेन्स द रिस्क ऑफ ऑयल सप्लाई शॉक. लेकिन द प्रीमियम बिकॉज ऑफ टाइम एंड प्रीमियम बिकॉज ऑफ ओपनिंग सो बीइंग सो क्लोज टू टुडे विल रिमेन टू बी, मतलब वो डीके हो जाएगा इन अ साइडवेज मार्केट. ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू टुडे. Great, those were my 3 cents. If you just feel like asking me anything, please type your questions here. The question is, the email ID is hey@darkmatter.co.in, and you could also just type your questions here in the comments. I'm here to answer you. Whatever you feel like, ask me. अगर मुझे आता है तो मैं बता दूंगा, नहीं आता तो बोलूँगा नहीं आता. But at least we will know कि there is a different alternate point of view. It is very important for us to do that. That's what this whole session is about. It's support. I'm also doing some other work, so I'm not going to be continually talking to you. So thanks a lot for your time, and thank you for tuning in.
Lovely. Again, as you see, there is recovery and both sides. Matlab, there is recovery also and there is selling off also. Nifty Bank is not able to hold 55,000. It's not a key level. 55,000 is not a key level. It is much below its support. So there is a problem there. Similarly, for Nifty 50, 23,600 was the key level. It is not able to hold that. शुरुआत में the signs are not good. The signs are showing a very strong bearish intent in the market. Okay, and again, like I said, the only reason that this remains is because of the the shock of supply on oil and gas. I've mentioned this earlier. You can go back in time in this real time video and listen to my comments. बार बार एक ही चीज एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ? Anyways, if you have any questions to ask, please type your questions here. I'll go back. Anybody who's joining us now, thanks a lot for your, for your time, and I hope this is able to bring a new change, okay, in your investing patterns. So stay signed in, and keep asking me questions if you need to answer. I will speak to you again at 9:45. A lot of you guys are buying fertilizer and LNG stocks. So not a bad idea because the price is rising. So जितने भी है इन लोगों को फायदा ही होगा.
in the short term. So that's a great idea to be buying those stocks. Similarly, you can also buy the crude, the OEM of crudes. जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट जो खुद का ड्रिल करते हैं, खुद का बनाते हैं, इंडिया में ऐसे दो ही हैं, आई थिंक ONGC एंड Oil India Limited. I think they have the ones who have their own wells. They don't really source it from the others, so they will be in a lot of benefit. Let me find that out. Who are the two original crude producers in India? I think there are two. I just don't know which two. Sometimes we forget that we are on live TV and there are live TV etiquettes. So, those of you who may have witnessed some non etiquettes, please ignore those. I'm sorry about that. I will be careful next time. Two companies that have their own refineries are ONGC. ONGC is the largest producer. 70% of India's crude oil is produced by ONGC. So stock of ONGC would have gone up, should have gone up. Similarly, Reliance produces 30% of India's um, domestic gas, not supply, but domestic gas production. So there'll be two industries who will be benefiting from these high prices. Lot of stocks in auto, almost all of the stocks in auto are down by 3 to 2%. Mahindra is at 3071. TVS is at 3485. Hero Motors is 5434. Eicher Motors is at 7170. Now that's a big down. Maruti is at 13,000. Bajaj Auto, I can't see here. I'll figure it out. Lekin Force Motors is at 21,000. So Maruti is the biggest loser here. Looks like one. They have they were recently trading at just a few days ago around 15,000. Before the results, they were trading at 16, 17,000. As I remember that. Yes, 17,300 was the highest, and that was on 7th Jan 2026. Just before 12th March, which is less than 2 months, it is at 13,200 and it's almost the bottom. So, yes, it is people, these guys are losing a lot of money. Ashok Leyland, a good old India growth story has come down. Asher Motor is one of the best growth stories that we have seen in the recent times. I remember this stock being traded at 3,400 levels. And from that 3,400 levels to coming to 7,100 levels in just, let's say, 1.5 years is, or maybe less than 1.5 years, more than, let's say, 2 years, is almost doubling in 2 years. That's a great story for all of us. If you were invested for 2 years, you would have doubled your money in this stock, Aisha Motor. But
Identification at the right time is the key. Anyways, what I'm going to do is we are at 9:45. Let's talk about what the chart says. Where does everything go? How has anybody moved? So again, Nifty is has not been able to cross the 55,000 cup barrier. It's a psychological barrier. Bank Nifty. Nifty, on the other hand, has is about 23,600. It's not a psychological barrier. It is a proper resistance. सो 23,600 के ऊपर बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि इट इज़ डिफेंडिंग 23,600 वेरी वेरी स्ट्रांगली. Just give me a moment. Let me take this phone, please. गिव मी अ फ्यू मिनट्स, मैं थोड़ी चाय लेकर आता हूँ. चाय बहुत ज़रूरी है.
So I'm back. And yes, there is some positive traction above 24,600. Nifty Bank is above 55,000. So it's come back up a little bit. Not exactly the best positive, but take a jump here. At its day's high. Bank Nifty is at its day's high. And I think Nifty is not yet. Good. Good. So it's going in. Anybody who joins in now, just go back and look at the videos. Look at this video. There is enough discussion I've had why uh, uh, the market has behaved like this. Okay, what is this weakness? What is the fundamental reason, and why you should not be investing right now? Just look at the VIX. Always just look at the VIX. The VIX is 22. Above 20, you cannot trust the market. It will move in any direction that it needs to. Today is not your day for investing. इसका एक basic गांठ बांध लो अपने हाथ में, हाथ में नहीं अपने thoughts में, कि you cannot trust the market when the VIX is above 20. VIX is nothing but volatility. Good work. Anybody who's invested in a bearish, uh, it's a great idea. I have been in a bearish mode since 19th of Feb, I think, and no new investments. I have a model that tells me basically whether the market is getting into a bearish mode or not. I could not have predicted कि ये गड़बड़ होने वाली इतना ज़्यादा war on Iran होने वाला etc etc. But there are certain indicators in market that will help you do that. You have to create your system, and that's what makes it, helpful. I'll circle back in 3 minutes. Let's talk at 10. Let's see how this has moved, how the market has moved in last 15 minutes.
So there we are back at 10, and 10 looks more promising than the way this market had started. Bank Nifty is now up at 55,200. Okay, it was not able to defend 55,000 today. So in this one candle, you have seen that it has gone from 54,969 to 55,269. So that is almost a 240 points jump. That's a big jump for one candle. Let's see if you had bought any PE, you would have suffered massively the correction of about 10 to 12% on your PEs that you bought at the bottom of the market. So don't do that. Any CEs, they barely would have moved. बहुत मुश्किल से move होते हैं CEs in this market as well. So don't do that. Don't gamble your money away. Nifty 50 is up at 23,670. Throughout the morning, it was trying to defend 23,600, which is its support level. Okay, will it successfully defend it today? It might, लेकिन 23,600 was its support. तो अगर वो 23,600 के पास close होता है, so that means it is very hard and it is barely defending it. So which means that the market still thinks कि everything that's happening in this market is bearish. So that is why you might not be in a good spot to buy the dip or identify the bottom as of now. Whatever movements that you see based in the next first 30 to 45 minutes are mostly based on geopolitical news and its impact analysis on Indian market. तो कल की geopolitical analysis ये है कि Iran does not want to stop the war. It has effectively still blocked the Strait of Hormuz, and that means the supply of oil, but most importantly, the supply of gas is going to be hindered. Very, very important. Again, like I said, if you have any questions, please type them in the comments or email it to me at hey@darkmatter.co.in. I'll be very happy to answer those. I generally keep taking questions in between the session. I'm going to start taking the questions based at 10:15. Tab tak I have three questions. I may have four, but most importantly at 10:15 to 10:30 the market sort of relaxes. जो भी कल का हुआ है उसके ऊपर देखने की कोशिश करता है. So let's move on. No worries. Thanks a lot for tuning in. Thank you for your time. Good to see you here.
जितनी बड़ी green उतनी बड़ी red. It's just dancing around here and there. This is what volatility means in this market. कोई भी एक साइड का सगा नहीं है, किसी भी एक साइड का सगा नहीं है.
सॉरी, काम करते करते पता ही नहीं चला कि 1017 हो गया. सो माय बैड, इट्स 1017. 1015 की एनालिसिस करते हुए सिंपल फैक्ट was not able to hold. None of these guys were able to hold. Nifty Bank is again at 55,000, trying to defend it. In fact, going down as well strongly as we speak. Nifty 50 is at, I think it's lower than 23,600, was not able to defend it. I think it closed below 23,600, so that's not a great sign. 23,600 ke niche close hona. No, closed at 23,609. So there was a defense, first defense. Okay, no problem. It's still a weak sign. Nothing great about it. Nothing has changed. And 77,000 का psychological level को break करके Sensex is trying to defend 76,000 now. And that is another story that's unfolding. But so top 80 stocks, Sensex के 30 और Nifty के 50 और बैंक निफ्टी के 12 टोटल मिला के आई एम श्योर दे आर डिफरेंट 18 different 80 different stocks. They are certainly not performing. Okay, from all sectors. So every sector is red as of now. No worries, I'll connect back with you at 1017. In the meantime, if you have any questions, please type them here. I'm here to answer them as your question comes. And I'm also finishing through my work. So yeah, I'm here live with you, trying to act as your sounding board. Thank you for tuning in and thank you for your time.
सॉरी अबाउट दैट. साथ में काम करने का मतलब है कि साथ में कॉल्स लेना पड़ता है. I'm here right now, just looking at the screen. Anything you would like to discuss, please type it here. I have a few questions. I'll get to them. जैसे ही थोड़ा सा कुछ खत्म होता है, I'll discuss those questions as well. In the meantime, जो भी आपको priority में discuss करना है, just put them here or email it to me. Thank you. Connecting back at 10:30. We see Nifty Bank is back up at 55,100. 55,000 को थोड़ा थोड़ा डिफेंड करते हुए, ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से डिफेंड कर दिया. आई एम श्योर निफ्टी इज ऑल्सो अबव 23,600. इन फैक्ट इट इज़ एट 23,640. बहुत ही मतलब देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इट्स जस्ट अ लिटिल बिट, जस्ट इनफ फॉर इट टू स्टे अबव द वाटर. ओके, सो डोंट बी क्या बोलते हैं हम,
डोंट बी ड्रॉन इनटू दिस मार्केट. जितना दूर रहें उतना अच्छा. ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है. हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द डे इट मे रजिस्टर अपवर्ड, बट ये भी हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द डे वो नीचे ही जाए. ओके, थिंग्स आर अनफोल्डिंग. Any one of you wants any input on options PE, CE, let me know. I have enough to keep you engaged. Thank you. Thank you for tuning in. Thank you for time. I'll speak to you again at 10:45.
Some good amount of defending is happening. Nifty has come to 23,715 in a very short span of time, defending 600 as of now very strongly. Bank Nifty, on the other hand, has gone up to 295, 55, 295. Abhi, just 15 minutes ago, we were looking at it trying to defend 55,000. And now it has gone up to 55, 272. What do you think? Has anything changed? Is the market tired of selling and does it really strongly want to go back up? Whatever your views are, just type them here, print them, send them to me in your mail or comments, and I shall get back to you on that. If you want to really, really invest, then maybe we can have a discussion about it. It does not matter. I think just using me as a sounding board will be much beneficial for your money. So thanks a lot for tuning in and thank you for your time. I'll speak to you back at 10:45. In the meanwhile, Nifty Bank is racing towards 55,300. Slowly but steady, I can say so. And similarly, Nifty 50 has come from 23,600, 23,600 से 23,700 तक धीरे धीरे कछुए की चाल से पर पहुंच तो रहा है, वो भी जरूरी है.
Coming back live, the theory is very strong. The the faster they rise, the harder they fall, or the harder they fall, the faster they rise. ठीक है? Great definition for a V-shaped market. ठीक है? So, लेकिन our market is not V-shaped. Our emotions are V-shaped. The market exactly is not V-shaped. It is right now in a bearish trap on the sideways track at 55 200, chasing, trying to go harder up. Abhi 2 minute pehle it was above 55 300. Right now it is trying to chase 55 200. This is Bank Nifty. Nifty 50 has seen little more stability. It was at 55 721. Right now stopped at 23 700. Okay, 23 600 is the support, and our elusive Sensex is 76 340. 2 minute, आधे घंटे पहले it was trying to defend 76,000. So आधे घंटे में the movement has been sharper upside on all of the three indices. But are they going to help hold the key results? Cool. I don't know. We just have to observe. At this point, I'm also absorbed in my work, so not really paying attention to many finer details. But mostly, what I encourage is कि ज़्यादा बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप बार बार किसी भी चीज़ को देखोगे तो it will feel कि वो small movements are also big movements. So try and avoid that. Help yourself.
Coming back live again. Seems like there is a little bit of progress. Bank Nifty is again trying to race past 55 300. सोच रहा है, कोशिश कर रहा है, बोलते बोलते शायद कर भी देगा, बट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये किसी को पता नहीं है. सिमिलरली निफ्टी 50 भी 23,745 पर है. आज फ्राइडे है, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है. ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल आर होपिंग कि इस वीकेंड पे ये ख़त्म हो जाएगा वॉर, और अगर ये वॉर ख़त्म हो गया तो फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत बचेगी नहीं. सो दैट्स अनदर स्टोरी है. सब लोग यही सोच रहे हैं मोस्टली कि ये हो सकता है, बट ये एक उम्मीद है एंड इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी डेटा. 2 दिन का रिस्क लूँ, सारा प्रॉफिट अभी बुक कर लूँ या बाद में करूँ, ठीक है. तो ये एक बहुत ही बड़ा सलीकी. तो इसीलिए जो मार्केट है इसमें एक शॉर्ट अनवाइंडिंग होती है. समथिंग फिनोमेना कॉल्ड शॉर्ट अनवाइंडिंग. ओके, सो जब शॉर्ट अनवाइंडिंग होता है, सॉरी शॉर्ट कवरिंग कहते हैं जिसको, शॉर्ट कवरिंग, उसमें मार्केट ऊपर आता है इवन इफ द फंडामेंटल हैज़ नॉट मूव्ड. So don't think of the short covering as a strong bearish move. It's important that you are able to distinguish between these two. अगले 2 दिन तक छुट्टी रहेगी, फ्राइडे इंक्लूडिंग, और ऊपर से टुडे इज अ क्लोजिंग, थर्सडे इज अ क्लोजिंग. सो यू विल सी सम मूवमेंट इन द मार्केट. एंड माई बैड अबाउट 2 दिन छुट्टी. टुडे इज थर्सडे, कल है फ्राइडे. सो टुमारो यू विल सी दिस बिहेवियर, टुडे यू मे नॉट. टुडे इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अ क्लोजर डे, वीकली क्लोज. So as you see, the market is, the bulls are trying to take control, but the bears are not giving up. So धीरे धीरे, हल्के हल्के, हौले हौले, जैसा मैंने लास्ट 15 मिनट वाले ब्रेक में कहा था. लेट्स सी कैसे जाता है.
बीच बीच में वेन एवर आई सी द चार्ट्स तो लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग हो रही है। यू नो हमने 750 900 से शुरू किया था, लाइक -900 से हम अभी एट दिस पॉइंट -450 पर आ गए। क्या ये -900 जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? इट्स नॉट समथिंग दैट्स इम्पॉसिबल, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वेयर दैट्स गोइंग टू बी। तो हो ज़रूर सकता है ये, डोंट थिंक कि नहीं होगा। So yeah, very strong defending, very very strong defending. लेकिन bears are also not giving up. Everybody is trying to find its way, their way in fact. थोड़ी देर में अभी DIs आएंगे, they will go to the bottom and start buying, जैसा वो हर दिन करते हैं. They want to get you the best NAV. हफ, आप सोचो 2 मार्च को DIs ने खरीदा 16,000, 4 मार्च को 27,000 crores, 5 मार्च को 18,000, 6 मार्च को 20,000, 9 मार्च को 17,000, 10 मार्च को 17,000 अगेन। ये आप लोग हैं। There's someone who's asking me a question कि should you find the opportunity to short the market or wait for some more rally? Mr. Brajesh ji, ये yes, I think you can find an opportunity to short this market, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर गलती से मार्केट साइडवेज चला गया तो सारा का सारा प्रीमियम डीके हो जाएगा। सो यूल हैव टू कीप इट वेरी टाइट, बहुत ही ज़्यादा टाइट स्प्रेड रखो। और बिकॉज वॉलेटिलिटी देखो, यू द वॉलेटिलिटी इज एट 21.66, इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन, इट कुड एक्चुअली बी गोइंग अप 600 पॉइंट्स इन नेक्स्ट 2 minutes. You will sell call, you will sell a call. कॉल का प्रीमियम तो ऑलरेडी डीकेड है। कॉल्स के प्रीमियम, ओके लेट्स टेस्ट इट, ठीक है, लेट्स टेस्ट करते हैं मिस्टर ब्रजेश। ऐसा करते हैं कि करंट मार्केट की कॉल लेते हैं 55,200 निफ्टी 50 की, या फिर निफ्टी 50 की 23,740 की, 23,000 24,800 की कॉल और पी देखते हैं। सी एन पी फॉर मार्च। So 24,800 की CE is 94 rupees. It is down 21%. 24,800 की PE is plus 10.58%. It is at 1,069. Okay. So basically what you're saying is you want to sell the call. If you sell the call right now, जो भी 20% ऑलरेडी नीचे हो रखी है, so are you expecting कि वो 95 से और नीचे चली जाएगी? Are you saying कि वो 95 से 0 आज की डेट में what is your timeline to buy? Are you saying that you want to do it for the month? 95 rupees कमाने के लिए you want to sell the call? Do you know how much that is? 95 into 65 कितना हुआ? 95 into 65, 9 6 54, 5,500 कमाने के लिए आप 1.26 lakhs का रिस्क ले रहे हैं। अपसाइड रिस्क इसका बहुत ज़्यादा है। Okay, there is unlimited upside risk and profit is 5,500, साढ़े से let's say 6,000, और the capital to put is 1,30,000. Okay, the certainty or the probability is 0, है ना? तो ये करना, this is how I see it. Mathematically, this is what I see. What do you think?
द मैथ्स इज वेरी क्लियर. आप मैथ्स सोचो, थिंक अबाउट द मैथ्स. प्रिंसिपल 1.3 lakhs, इसको देख लो. मैथ्स 1.3 lakhs, 3 lakhs, ठीक है. टैक्स 2%. चाहे आप जीतो चाहे आप हारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट्स इक्वल टू 1.3 लाख का 2% कितना हुआ? 2600 रुपया. करेक्ट, 2600 रुपया. रिस्क मेरी कैलकुलेशन देखिए. फॉर 4,000 रुपीज, करेक्ट. 23,700 इन द मनी. 2 मिनट सर, 2 मिनट, 2 मिनट सर, रुकिए. 23,700 इन द मनी. किधर गई 23,700 इन द मनी? मार्च CE 23,700 इन द मनी 550 रुपये की है. 1300 एज SL. 1300 एज SL क्यों डालेंगे आप? 700 रुपये ऊपर है भाई. 1300 एज SL तो 700 रुपये का ऊपर है. 17th March एक्सपायरी यू आर सेइंग. ओके, लेट मी ट्राई 17th March एक्सपायरी. 2 मिनट. अरे यार, 2 सेकेंड सर. 17th March एक्सपायरी CE यू वांट बाय. 300 रुपये की है. अरे 300 रुपये की है. आपका प्रॉफिट पोटेंशियल 300 रुपये है. आप स्टॉप लॉस 1500 रुपये लगा रहे हो. 300 रुपये का प्रॉफिट है, आप 800 रुपये का, मतलब आप 1200 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो. कैसे? ये तो मैथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? 1300 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो आप. 1000 रुपये का स्टॉप लॉस, मतलब 700 रुपये का लॉस लगा रहे हो 300 रुपये लेने के लिए. ये आपकी मैथ है. मैं सिर्फ मैथ बता रहा हूँ, मैं बाकी की बातें नहीं करूँगा. आई वांट टू बी वेरी क्लियर. ओके, सॉरी, आई एम गेटिंग कैरिड अवे. आई एम नॉट लिसनिंग टू यू. प्लीज बोलिए. जस्ट रिस्क रिवॉर्ड के साथ, नथिंग एल्स. आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू. Intraday, see for 20 RSSL, I'll get 20, 30, then I'll book. It's for intraday. आज आप sell 27 lots with C 20 rupees stop loss. Sell 27. थोड़ा सा I'm trying to understand. Give me a moment. It's for intraday. You are selling 27 lot of CE with 20 as your stop loss. 20 as your stop loss. 20 कैसे होगा आपका stop loss? आप कह रहे हैं 47 का. एक सेकेंड में, आई एम लुकिंग एट द प्राइस. ब्रजेश जी, March 23,700 17th का वीकली CE
इज फॉर 275 रुपीज। आप कह रहे हैं कि इसके 27 लॉट्स खरीदना चाहते हैं आप। द प्राइस ऑफ दैट इज 1,94,000 फॉर 1 लाख। ओके 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 सर। सॉरी, आई एम जस्ट सो कंफ्यूज्ड। 17 मार्च, 17 मार्च ही बोल रहे हैं आप? शॉर्ट टाइप कर सकते हैं, यस के लिए वाई बोल सकते हैं। आप 17 मार्च बोल रहे हैं। दिस इज द स्क्रीन शॉट आई हैव। ओके, 17 मार्च के लिए द प्राइस दैट आई सी निफ्टी का 23,700 इज 266 रुपये, 268 रुपीज। आपने 20 कोट किया, गलती से कर दिया शायद। लेट मी पुट द स्क्रीन। देखता हूँ मैं अगर आपको स्क्रीन पे डाल सकता हूँ तो। सो 265 का है सर, और अगर आप इसमें, आप क्या चाह रहे हैं 265 में? आप 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हैं, 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। It dropped already. I was asking and it was 305. Okay. सर आज के डेट में ओके 305 ऑलरेडी। स्टॉप लॉस यूनिट टारगेट वाज 270, 260। ओह नो 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 नो। ऐसा मत सोचो, यू हैव मिस्ड टू शॉर्ट। सर 1 मिनट में पैसे कमाना इज नॉट मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। मेरा ये मानना है कि स्कैल्पिंग में दोनों तरफ का रिस्क होता है। अगर ये भाग जाता तो आप 20 रुपए हार जाते। सो डोंट थिंक ऑफ इट कि यू मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कैल्पिंग। आई एम सॉरी, ये तो आई सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विथ यू। पैसा बचाइए। विक्स सर 21 पर है, 22 पर चली गई है। तो ये आपको लग रहा है ये दूसरी साइड भी जा सकता था। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रीइंफोर्समेंट कहते हैं इसको, जिसमें आप सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो अपनी चीज़ों के बारे में। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि ऐसा ना करें प्लीज़। आप पॉजिटिव थिंकिंग को रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये उल्टा चले जाता तो आप 20 रुपए घाटे में जाते, बैठे बैठे चले जाते। 16 into 20 सीधे 1200-1300 रुपये जाते, विच इज इक्वल टू 3% प्लस 26 रुपये आपको जो टैक्स में देना है, 2% आपको देना है। नो वरीज, आई एम सॉरी, मैं आपके काम नहीं आ पाया। मैं इतने जल्दी से डिसाइड नहीं कर सकता। आई हैव डन स्कैल्पिंग बिफोर एंड टाइम कंस्ट्रेन होता है। मुझे समझ में नहीं आया कि आपको एकदम से करने का मन कर रहा है। सो माय बैड। बट अगेन, इतना सब करने के बाद मुझे ये ज़रूर पता है कि स्कैल्पिंग इज़ नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी in a very volatile, sorry, it is a great strategy in a volatile market, but the risk is very high. No worries, no worries Brajesh ji. Next time I'll try and be more helpful. आज के लिए मेरी तरफ से माफ़ी। Have a great day. I hope अगर आप scalp करते हो तो please put your comments here. And if you're a successful one, then I will showcase you for tomorrow. But don't take that as a reinforcement, positive reinforcement. Thank you. एकदम से ब्रजेश जी ने मेरे अंदर का जानवर जगा दिया स्कैल्पिंग के बारे में बात करके। सो थैंक यू अगेन एंड एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज बताइए। आई विल गो गेट बैक टू माय वर्क। आई एम लुकिंग एट इट, बट या नो प्रॉब्लम। अब ब्रजेश जी, आपने, मैं एक और चीज़ कन्फेस करना चाहूँगा। आपने मुझे इसमें डाल दिया। अब मैं पूरे दिन देखते रहूँगा कि मैं सही था कि मैं गलत था।
सारे लोग यही करते हैं, राइट? पर मैं जानता हूँ कि ये करेक्ट डिसीजन है। स्कैल्पिंग बहुत ही रिस्की होती है स्ट्रैटेजी। तो हाँ, एक ट्रेड आपके उसमें चल गया। धन्यवाद, 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 वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, अच्छा लगा। नहीं ब्रजेश जी, आई एम इन पूना एक्चुअली। आई एम इन पूना, आई एम नॉट इन बैंगलोर। So yes, if you sometime come down to Pune, we should get down together for a coffee. Absolutely, I'll be delighted. Very, very happy to see you or meet you. I get very passionate about saving money. मुझे बहुत लॉस होता है तो हम सबको तो बहुत चिढ़ मचती है, बट आई गेट वेरी पैशनेट अबाउट सेविंग इट। गलती मत करो, कुछ ऐसा बनाओ कि जिससे पैसे बच से रहें, बने ना, मिटे ना। तो कभी कभी उसमें आई कैन गेट वेरी पैशनेट। जैसे गेम खेलते हैं उसमें पैशनेट होता है वैसे। सो यस, डोंट माइंड इट इफ आई एम अ लिटिल क्रास, ऐसा लगता है कभी तो जस्ट से इट आउट। थैंक यू।
So as we approach 11:30, we've seen some moves as per the VIX volatility. You've seen it. Market Nifty Bank has gone up to 374 to 555 372. Now it's coming back to 55 100, defending its own numbers. Nifty 50 is back at 23 684. It was the high that it went up to was 23 775. So yes, it is becoming a problem. Push and pull strategy, seesaw. एक तरफ बुल्स है, एक तरफ बेयर्स हैं, देखते हैं कौन भारी है आज के दिन में. बट एज ऑफ नाउ, एज इट वाज एक्सपेक्टेड, कोई भी क्लैरिटी नहीं है. सो अगेन वन ऑफ आवर फ्रेंड्स वांटेड टू डू अ स्कैल्पिंग. Fortunately, the market at that point was on his side. We wish him all the luck. But any of you who want to do the scalping, please do the math before you start the scalping. स्कैल्पिंग सिर्फ एंटर करने का 2% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, सिर्फ एंटर करने का. और अगर आप 2% से कम कमा रहे हो तो देन इफेक्टिवली यू आर लूजिंग द मनी फॉर सो मच ऑफ रिस्क. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन देन यू डू इट, but it's very risky. It's like flipping a coin, nothing more than that. I wish you all the luck for anyone who's doing it.
While swings are happening, I will connect back with you at 11:45 in 3-4 minutes. Remember, this live session is going to go on until 12:15. Okay, if you have any questions, you may just type them here, and I will try and answer them between my work. Uh, because it's always good to connect. It's always good to have a second opinion. So that's great.
As we see and as we come close to midday, 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे जनरली अच्छे मूव्स देखते हैं. यू कैन सी लाइक सम स्ट्रॉन्ग मूव्स या, बट यू कैन ऑल्सो सी कि मार्केट इज बेसिकली टॉन. टॉन का मतलब है दोनों साइड पुश पुल है, ना ऊपर है ना नीचे है, समझ नहीं आ रहा करा के. एक्सक्यूज मी. बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल स्टॉक चार्ट है ये. फ्रॉम 27th February onwards. And the next so the way they are saying this is कि अगर आज 23,600 को ब्रेक कर देता तो then we will see 22,500 as our next support level. और अगर आप इसको चार्ट में देखें 23,600 was just when Operation Sindoor had occurred. उसके बाद वाली रैली के 2-3 पीसेस थे ये. 7th April. So we are 23,500 will be चार महीने तक we were stuck at 24,300 levels. Almost 24,300, and on the top it was 25,600. 25,600 very rarely, but mostly 25,200. 24,300 and 25,200. ये इसके बीच में हम probably मई से लेके अक्टूबर 14 अक्टूबर तक थे. वापस हमने इसमें एंट्री तब करी जब हमारा लास्ट ईयर सॉरी दिस ईयर एंड जैन एंड में the markets were relatively weaker because of the profits. And then we father of all deals sign, which took it to higher levels. But then उतनी तेजी से थे ट्रंप ने जो फादर ऑफ ऑल डील्स बोल के मार्केट भगाया था, वो उतनी तेजी से उसने डबल तेजी से गिरा दिया. फादर को येड़ा बना दिया उसने. So now we are back below 24,000. And in the Operation Sindoor territory. Operation Sindoor territory actually begins at 22,000, 23,000. So if we break 23,600 today, the next level will be 22,500. That would be core Operation Sindoor territory. अब आप ये सोचिए कि what has changed between that time to today.
which is almost 1 year, April of last month to April of this month. Almost 1 month. Sometimes you lose track of mind, and I feel like that now. थोड़ा देखते हैं भाई चल क्या रहा है. Has anything changed? एक बात मुझे बहुत खराब लगती है कि यूएस एंड इज़राइल हैव उन्होंने वॉर टाइम वीडियोस को बैन कर दिया. बोलते नहीं देंगे, मत मत लगा. तो वी डोंट गेट टू सी एनी अपडेट फ्रॉम दैट साइड. इसको इंफॉर्मेशन वॉर्स बोलते हैं, बट इट्स नॉट ग्रेट.
ये ट्रम्प ने ये वॉर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. We are here. It's an absolute disgrace. So we are back at 12. और 12 o'clock आप देख रहे हैं कि हाउ थिंग्स आर गेटिंग डिफेंडेड. एक ग्रीन वेव आती है, एक रेड वेव आती है, एक ग्रीन वेव आती है, एक रेड वेव आती है. So yes, all of Bank Nifty, Nifty 50 and Sensex are defending some key levels, but there is weakness, strong weakness, to be honest with you. Let's see how this works out. We have one more day in the week, and this could, in fact, be one of the worst performing weeks of many years. हम check कर सकते हैं, by the way. Has it been the worst performing week? Yes. From 57,000 high of Bank Nifty to 54,000 of एक 5 दिन के अंदर it has come down 3,000 points. 60 to 57. So it's not really 60 to 57. So this is 2,200. पर ये है 57,138 to 54,823.
अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखते हुए, मतलब सॉरी इट्स नॉट अच्छी खासी, ये सिर्फ मतलब एक पॉजिटिव सिग्नल्स दिख रहे हैं हमें, बट अच्छी खासी कोई पॉजिटिविटी नहीं है इसमें. दिस इज माई लास्ट 15-minute pit stop, and I will end the screen at the end of this, and I will join you guys again at 2:30. So hopefully we should be good to go. Anyone who has questions, please type and we can discuss them in the next setup. लंच के लिए ब्रेक करेंगे थोड़ी देर, बाकी काम करने के लिए ब्रेक करेंगे. What do we see? Again we see कि थोड़ी सी वीकनेस आते हुए वापस, because there is high wicks. ये होता ही है हमेशा, आगे पीछे थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखेगी, ज़्यादा वीकनेस दिखेगी, या ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी, थोड़ी वीकनेस दिखेगी, बट वॉलेटिलिटी है. तो इन द एंड बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है ड्यूरिंग द डे. द रीज़न व्हाट हैपेंस इज कि जब ये बहुत लो खुलता है, सो द मार्केट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द शॉर्ट कवरिंग. शॉर्ट कवरिंग क्विकली गिव्स इट a green candle. It gives you a big green push up, because everybody who's in shorts सोचता है कि भाई हो गया, ज़्यादा शॉर्ट पे पैसा कमाते हैं. So they are effectively buying the stocks, and buying means कि there is more demand and thus it goes up. So short covering होती है. जैसे ही short covering एक particular level पे पहुंच जाती है, when it is exhausted, you suddenly see a long unwinding. तो जैसे ही वो long unwinding होती है, तो इसका मतलब the market starts falling again, कि लोग अपने losses भी book करना शुरू करते हैं profits के साथ साथ, जैसे जैसे ऊपर जाता है. So every time you will see that there is a significantly tall green or a red candle at the start of the day, whatever, then you will see that there is one following it again. तो ये हमेशा होता है. This is like the rule. Don't quote me on this. Don't start placing bets because of this. This is 50%. Again, it's a coin toss. जब तक कोई भी चीज़ validated नहीं होती by 10 years to 20 years statistical analysis, don't think of it as a validation. Okay, I'm not trying here to give you some quick get rich schemes. बट बेसिकली ये इम्बैलेंस होता है मार्केट का, जिसको बहुत लोग एक्सप्लॉइट करते हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु वाज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द मार्केट इम्बैलेंस, प्रजेश, टुडे आफ्टरनून ही सेड कि मैं शॉर्ट कर देता हूँ सीई. हिज एक्सपेक्टेशन वाज कि एकदम से गिरेगा, एंड राइटफुली सो. ही सेड 301 and it was 20 rupees down. So effectively, had he
put his money. तो उनको 65 into 30 rupees हाथ में मिलते. Now how much is 65 into 30 rupees? Right, 65 into 30 rupees on a simple calculation is 1800 rupees. For the value that he was putting in there, okay, which was 1.56 lakhs for selling that particular option, okay, uh, उनको 2% टैक्स देना पड़ता. So 2% tax on that would have been 1.56 lakhs का 1% होता है 1,560. 2% would be 3,000. So to earn 1,800 rupees, he was ready to pay 3,000 rupees of tax. मुश्किल है ये थोड़ा सा. This math is very hard. या तो मैं गलत कर रहा हूँ. 60 into 30 कितना होता है? 60 into 30, 40 into 30 कर लगे, 40 into 60 कर लेते, 2,400 रुपये फिर भी. बट आई नो कि वो डिफरेंस 30 रुपीज़ का ही था. सो नो, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट. Scalping is a great strategy if you are able to get the downtrend, but it exposes you to unlimited risk. In this case, the person who was scalping was willing to expose himself to unlimited risk for a 30 rupees profit. It's bad math. Anyways, when I speak with him next, I'll tell him I am sure he understands it's not an opinion on his style of working. It's just a simple math that all of us need to understand. So for all of you who have been with me for last so many hours, thanks a lot for watching me. Thanks a lot for listening. Thank you for tuning in. I'll get back here again at 2:30 to 3:30. If you feel like you have any questions, please post them here and I will answer them back to you. It's 12:12. 3 more minutes for this session to close. And as we see, there is weakness in the market again. Nifty is back, trying very close to 23,700, and maybe starting the downfall towards 23,600 again. Afternoon, mein generally markets are weaker. Becomes a problem. We see a quick reversal back to 745 from 715. Speaks of tons of market volatility. No problem. Anyway, we are at the close of the session. We are very, very close. And
Again, I appreciate all of you tuning in. Lovely questions, good session. Thanks a lot. And I'm gonna end the stream now in next 30 seconds. Nifty is going strong. You can type your comments and tell me ki, where do you think it's gonna end up for the 2:30 session? Thank you again. Bye.